Everyone, welcome to the video. In this video, we are going to see a quick revision of all the derivation which are important from exams perspective. So we are going to see binomial distribution first, and we are going to derive mean and variance. Okay, mean and variance. You can denote it by sigma square. Okay, so let's just start. So first of all, for mean, you need to remember a few things. That is, x is equal to 0 to n. Okay, x into px. Okay, so what is the value of px here is px is equal to ncx px qn minus x. Okay, so now we need to substitute this formula. You all have to remember is this, मतलब कि आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि आपको पता है मीन का फॉर्मूला था x इंटू एफ एक्स लिखो पी एक्स लिखो, डजेंट मैटर. All you have to remember this, and we are now substituting the value of px which I have just now written here. You can see I can highlight it here. Okay, so let's substitute this. So ncx px, this is the formula of binomial distribution. I have taught it earlier. And now we are gonna substitute the value of ncx. ncx का जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस x अपॉन x factorial. Okay, so this is the formula. Now we are going to substitute in the above equation. So x is equal to 0 to n and x into n factorial n minus x and upon x factorial. Now p is going to be written as it is and this also as it is because there is no change needed. Now you can write n factorial as n minus 1, right? You can open this factorial sign. So we are going to do this here also. We will just open this factorial n. Okay, so x into n minus 1, and we are going to write as it is. We are going to open x factorial as well because x can be written as x minus 1 factorial, right? So now we are going to do this. Okay, this is going to be written the same. Now this x minus 1 factorial. Now you can cancel this out. Okay, sorry, this is not n, this is x. Just a minute. Minus 1. Now you have to write, can we write p as this, like this, p plus 1, p minus 1, and q as like n minus 1. Okay, n minus x, sorry, that is written as same. Okay, now if you want to take p and x common, so how we are going to take is n and p, because this positive p, if we write like this, p x minus 1 and p1, so we can take common, right? We have used a basic formula of exponential that we can, if the power is like base is same, the power gets added, so we can separate the power also. So if you want p, so we can just separate it like this, right? We can separate, and if you want to turn it into same thing, so you can add the power, right? It means the same thing. So this is a basic rule of exponential, you can see. Now we are gonna write inside if we see हमारे पास n minus 1 बच रहा है और n minus x है, ठीक है, नीचे तो n minus x है और नीचे x minus 1. तो you don't need to remember it, बट मैं आपको बता देती हूँ. इसका जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब जैसे ये n लिख दिया मैंने, p लिख दिया, ये जो पूरा टर्म है ना, this term, if you see, just a minute, if you see this term, this entire term you can write it as, इसका आप ऐसे लिख सकते हो, p plus q power n minus 1. So you already know that p plus q is equal to 1 because sum of total probability is equal to 1. Okay, so we will write this as 1
and 1 have any power, that is only 1. So you have, so this is the derivation of mean of binomial. Now let's go for variance. So variance is also similar like this. If you need to find variance, you need to know this formula: x is equal to 0 to n, and for variance you are going to write x plus x minus 1 x. 1 second. Okay, so I'll tell you how it came. Okay, so you already know the formula of variance, that is x is equal to 0 to n x square into px, right? This is how we write variance. But can we write x square as x plus x minus 1 and x? Because if you see this x, if you multiply x inside this, you will get x square minus x, right? This get cancel out and you get x square. So we can actually write x like this. So I have done the same thing over here. Now we are gonna multiply it. That means you have this term x is equal to 0 to n और यहाँ पर पी एक्स है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई करना है. बेसिकली यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग इनसाइड इट. आई विल शो यू हाउ. मतलब कि ये वाली जो चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको जो है आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई and see. We will get x is equal to 0 to n. You get px. Okay, then we will add a sign of addition. Then we will put the limit again because we are multiplying the same thing inside. So x minus 1 into px. Okay, so you just now know the value of this because just now we have derived. ये जो होता है ये मीन होता है. बेसिकली आपको पता ही होगा फार्मूला. मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है बाइनोमियल के लिए x इज 0 से n x इंटू पी एक्स. यहाँ पर x इंटू पी एक्स, अगर पी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे जो मैंने ऊपर बताई तो आपका मीन आ जाएगा, राइट? तो आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो दैट दिस पार्ट विच आई हैव लाइक हाईलाइटेड is n and p. Okay, now अब हमें rest of the part, the remaining part, and let me change the highlighter. This remaining part we need to solve. Okay, so we are gonna add, and now let's see. So you already know the value of px. I have told you above. You can see it's here, right? It's here. This is the value of px. Now we are gonna substitute this value. Okay, so we will substitute the value here. Okay, x is equal to n and x minus 1 into px. Now I am just substituting value. Okay, so n factorial, n minus x factorial, and x factorial. Now we need to know some things before moving further. That is, can we write n factorial as n minus 1 and n minus 2, right? We can go till 1, right? This is the format of factorial. Can we write x factorial as x minus 1 x minus 2 factorial? Of course we can write. Let me just highlight this part. Okay, now we are going to substitute this part, whatever I have just now told you. So we have written n and p. Now x is equal to 0 n. We write like this: n minus 1 n minus 2 factorial. Okay, now x factorial, then x factorial can be written as, we can write like this, right? So we will write it here: x minus 1 and x minus 2 factorial. Okay, and this x minus 1 was written as same. Okay, now p and x will be written as same. There's no change needed right now. Now this get cancelled with this, right? And can we write p as this? Because we have written two terms, we need to make this term into a term like this: p plus q n minus 2. हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, तो हमें ये चीज़ चाहिए. तो हम जो है p को ऐसे लिखेंगे:
बेसिकली चीज़ें याद करने की है, इसमें कोई मतलब सोचना नहीं है कि ये कहाँ से आया। इट्स जस्ट यू नीड टू मेमोराइज इट। सो एन पी, अब हम पी को जो है पी प्लस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्ली, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। हमें यहाँ पर कॉमन लेना है एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड पी की पावर स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन लिया, अंदर जो बचा है आपका पार्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस एक्स और एक्स माइनस टू, और यहाँ पर पी एन माइनस एक्स और पी एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। ये जो पार्ट है, द पार्ट विच आई एम राइट नाउ गोना हाईलाइट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसकी जो वैल्यू है वो मैंने आपको अभी बताई है। इसका जो वैल्यू होने वाला है मैं बताती हूँ, ये एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। ये आपने कॉमन ले लिया है। दिस पार्ट वैल्यू इज़ पी प्लस क्यू एन माइनस टू, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था एन माइनस वन, ये एन माइनस टू होगा। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू यू ऑलरेडी नो इट्स वन, तो एन माइनस वन की पावर टू मतलब ये वन ही होगा। वन की पावर कोई भी चीज़ वन ही होता है, ओके। अब आपके पास कुछ चीज़ें बचती हैं, अब आप उनको देख लेते हैं। एन पी, ठीक है। अगर मैं इसको लाइक ऐसे लिख लूँ एन स्क्वायर, मतलब मैं अंडर मल्टीप्लाई कर रही हूँ पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है बेसिकली। एन पी को साथ में लिखा, एन पी स्क्वायर को अंदर एन स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर सेम, अंदर वन था तो एन पी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वैल्यू आई है हमारी एक्स ई एक्स स्क्वायर की। आपको फार्मूला पता ही होगा वेरिएंस का, जो होता है वो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई, मतलब जो मीन होता है उसका होल स्क्वायर होता है, राइट। तो हमने ई एक्स की वैल्यू निकाली और मीन को अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो यही होता है। तो अब आपके पास जो है ई एक्स स्क्वायर जो है आपके पास यही है पी एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर, और यू ऑलरेडी नो जो ई मतलब मीन जो वैल्यू होती है वो एन पी होता है, इसका स्क्वायर करना है बेसिकली स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये अपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये लेफ्ट विद एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। तो यहाँ पर एन और पी कॉमन आ रहा है तो हम वन माइनस पी लिख सकते हैं, एंड यू ऑलरेडी नो पी प्लस क्यू जो होता है वो वन होता है। अगर हम यहाँ पर वन माइनस पी लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। तो एन पी क्यू इज़ द वेरिएंस, ठीक है। सो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ वेरिएंस, एंड ये एग्ज़ाम में आता है तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।